Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is Changing World, and today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly start with the recap. So quickly listen to the question and then answer them. My dear students, quickly tell me that how was life in the past? It was simple, slow, and might say it was also difficult. So next is compare the communication system of the past with the present. In the old times for communication, people used to write letters, and nowadays people can call each other, they can send emails to each other, they can connect with each other through the video calls. So nowadays we can say the communication is far more developed and fast than the past. So my dear students, how do people travel to far-flung areas in the present days? Through cars, buses, aeroplanes. So that's how people travel from one place to another in present days. So how have food and clothing changed over time? So food and clothing has also changed over time. आजकल के दौर में people prefer to have processed food more. And in older times, people used to like fresh fruits and vegetables. और इसी तरीके से क्लोथिंग जो है वो भी बहुत चेंज हो गई है, अब बहुत मॉडर्न क्लोथिंग है और सीज़न इफेक्ट नहीं करता इतनी क्लोथिंग को. पहले ज़माने में सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहने जाते थे क्योंकि हीटिंग सिस्टम्स नहीं होते थे. गर्मियों में बहुत लाइट कपड़े पहने जाते थे क्योंकि कूलिंग सिस्टम्स नहीं होते थे. सो नाउ डेज देर आर प्रॉपर हीटिंग सिस्टम्स एंड कूलिंग सिस्टम्स, जिसकी वजह से हमें जो है वो क्लोथिंग के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify how schools, communities, transportation have changed over time from the given pictures. So my dear students, आज आपकी जो given pictures हैं book के अंदर, उसमें से हम जो different pictures कैसे show कर रहे हैं कि past और present times में क्या changes आए हैं, आज हम वो check करेंगे. Okay, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that, O believers, fasting is prescribed for you as it was prescribed for the people before you, so that you may become pious. So my dear students, हम देख रहे हैं कि टाइम से कैसे जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं with the period of time and with technology, but religion will remain the same. वो पहले भी ऐसे ही था, वही तालीमात थी, वही आपको रोज़े भी रखने थे, नमाज भी पढ़नी थी, and even now we fast and we pray and we pay zakat, we go to Hajj. So all the religious activities, they will remain the same. They will not change with the time. So my dear students, now the pre-reading questions. So let's have a look. Name some facilities that you have but your grandparents did not have in the past. Televisions, mobile phones, computers, cars, ACs. So these are some facilities which were not present in the past or which our grandparents did not enjoy. So my dear students, now quickly open page number 48 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now look at the pictures. On one side there are pictures from the past, and on the other side you can see the pictures from the present. So now let's compare them. पास्ट और प्रेजेंट में अगर हम सबसे पहले स्कूल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन ओल्ड टाइम्स द एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट मच डेवलप्ड. लोग बहुत ज़्यादा स्कूल भी नहीं जाते थे, अगर स्कूल्स होते थे तो वो बहुत दूर होते थे, और अगर स्कूल्स चले भी जाते थे तो स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि चेयर्स, टेबल्स, फैंस, ब्लैक बोर्ड्स, दीज काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ वर नॉट प्रेजेंट इन ओल्ड टाइम्स. जैसे आजकल के दौर में तो हर क्लास में LCD भी लगी होती है, AC भी लगा होता है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, एंड इवन इन सम स्कूल्स देयर आर टैबलेट्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन. सो अब जो है वो एजुकेशन जो है एज यू कैन सी इट्स मच मोर developed. So now transportation. In older times even there were aeroplanes, but एक तो उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो आप देख सकते हैं कि वो हर किसी की अप्रोच में नहीं होते थे, और आप देख सकते हैं कि इसमें सीटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए यानी कि पायलट के लिए, तो ये जो है वो ज़्यादा लोगों को कैरी करने के लिए नहीं होता था. अब जो है देयर आर प्रॉपर पैसेंजर प्लेन्स जिसमें आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं,
एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल कर सकते हैं, एंड दीज प्लेन्स कैरी अ लॉट ऑफ पीपल वन टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को जो है ये लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो है यू कैन सी द डिफरेंस, और जो पुराने एरोप्लेन थे दे वर नॉट फास्ट एज द प्लेन्स आर टुडे। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स। सो हाउसेज और बिल्डिंग्स कैसे होते थे? इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज टू बिल्ड मड हाउसेज। व्हाई? बिकॉज मड कीप्स देम वार्म इन द विंटर, और सर्दियों में और गर्मियों में ये उनको ठंडा रखती थी। क्योंकि प्रॉपर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम पहले नहीं होते थे, तो उनको कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करना होता था पहले ज़माने में जिससे वो अपने आप को गर्म रख सके सर्दियों में और गर्मियों में ठंडा रख सके। सो नाउ अ डेज क्योंकि प्रॉपर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजीज बहुत बेटर हो गई हैं, सो पीपल मेक देयर होम्स विद सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड दे आर प्रॉपरली डेकोरेटेड। बड़े बंगलोज जो हैं वो बनते हैं। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिल्डिंग जो है उनके भी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। Next is transportation system. In older times, people used to transport on animals. And nowadays, there are proper vehicles to carry people from one place to another. In older times, people used to communicate through letter writing. और letter writing आप देख सकते हैं कि letters जो है वो बहुत दिन बाद जाके जो है वो मिलता है। और अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती थी पहले ज़माने में, तो तब टेलीग्राम होता था जो कि एक सिंगल लाइन का होता था, बहुत शॉर्ट वर्ड्स में होता था। वो जो है वो अर्जेंट पहुंचता था और वो भी 24 आवर्स में पहुंचता था। एंड नाउ अ डेज योर लव्ड वंस एंड योर रिलेटिव्स आर जस्ट अ सिंगल बटन अवे, क्लिक अवे। आप उनको क्लिक करते हैं, यू कॉल देम एंड यू टॉक टू देम, और आप उनसे हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। So in older days there were no electricity, so people used to light up their houses with the help of lanterns and candles. Nowadays people use proper LED lights because there is electricity की technology है जिसकी वजह से घर जो है वो बहुत रोशन हो जाते हैं because of electricity. So this is how there is change in past and present times, as you can see clearly from these pictures. So my dear students, this is now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So this is a very fun worksheet. Write down your name and your class, and then cut the pictures and paste them in correct column. So here are different pictures on one side. So आपको इनको cut करना है, पहले सब pictures को अलग अलग boxes को cut कर लें आप देख सकते हैं cutting के लिए proper आपको stencil दिया गया है, and then paste them in the proper column. Which picture belongs to past and which belongs to present. This is an older bicycle, that is a car. This is a calculator, that is an older plane. This is a modern cycle, that is an old car. This is an abacus, which was used as a calculator in older times, and that is a modern plane. So इनको आपने past और present के column में arrange करना है, paste करना है. So next is choose an object from above. How do you think it could change in the future? Also draw its new version. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो ऊपर देखने को मिली हैं। इनमें से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करें और बताएं कि फ्यूचर में, आप प्रेजेंट है तो फ्यूचर में ये चीज़ कैसे जो है वो चेंज हो सकती है या इसके अंदर एवोल्यूशन हो सकती है। आपने उसको यहाँ पर ड्रॉ भी करना है और फिर जो है आप यहाँ पे उसकी जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन्स के बारे में लिख सकते हैं कि दे विल बी मोर फास्टर, टेक्नोलॉजी जो है उनके अंदर ज़्यादा हो सकती है, और आप उनको जैसे मॉडिफाई करना चाहते हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। ये टोटली एक क्रिएटिव क्वेश्चन है। So you will pause the video and you will complete this worksheet. I hope you have finished it, submit it to your teacher, and then we will move forward. So my dear students, so now you will move forward towards page number 52 of your GK3 books. So here we will start the reading question. So you will read each picture and then you will write P for the pictures that are related to present and P for the pictures that were in the past. So here are different pictures. You have to tell that which one will be in present and which will be in the past. So आपको T लिखना है present की pictures के लिए और P लिखना है past की pictures के लिए. Let me do the sum for you. So this is T because it is in present. This is P because it was in past. So this is how you will complete the rest of the page. So quickly pause the video and complete it.
I hope you have done it. Now we will move forward. So my dear students, this is the next part of the reading page. So इसमें भी आपको T और P से present और past को जो है वो complete करना है. As this is T, this is also T, this is P, this is T, this is P, and this is T. So this is how you will complete it, and we will move forward towards the evaluation. For evaluation, I will ask question number 6 from page number 51. Compare the life of people in the past with the present. आपको past और present के pictures लोगों की लाइफ को कंपेयर करना है. हमने बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो अभी स्टडी की हैं जिनसे आप इजीली जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. Let me help you out. In the older days, people do not have very modern education or proper education system. Nowadays, people have modern and developed education system. In the older time, people used to light up their homes with lanterns. Nowadays, we have electricity and LED bulbs to light up our houses. In older days, people used to build up their houses with mud. Nowadays, they built it up with cement and bricks. And in older days, there were no proper transportation system. People used to travel from one place to another on animals, and nowadays they have proper transportation system like buses, cars, and aeroplanes. In older days, people used to communicate through by writing letters, and nowadays people use mobile phones for calling, they use emails, they use video calls for their communication. So this is it. Now is the time to note down your homework. For homework, you will do question number 2 and question number 4 given on page number 54. So write any 2 advantages of modern communication system. आजकल के communication system के क्या advantages हैं? It is fast, it is time saving, it is money saving. So we can say कि आजकल का जो system है, it is much more beneficial. Next is search for any 2 modern inventions other than those given in the book. So my dear students, आजकल के दौर में और कौन सी modern inventions हुई हैं जो कि पहले नहीं थी. So book में जो है उनके अलावा आपको लिखनी है. For example, let me give you an example. Older days में people used to have hand fans. Nowadays we have electricity fans and we also have air conditioners. In older days, people used to keep them warm with the help of wood, or they used to light up the fire. And nowadays they have proper heating system like heaters to keep them warm. So my dear students, this is how you can write about different inventions which we are using today. So this is your homework, and another home activity number 1 that you will do is ask your grandparents what means they used to keep their houses warm during winter and compare it with that of present day means. Draw a comparison chart in your notebook. A model is given below. So my dear students, इस तरीके से आप एक comparison बनाएंगे. Older means क्या थे, present means क्या है और दोनों का difference क्या है. So here you can see in older days people used to light up fire to keep them warm, and nowadays we have proper heating system like heaters, electrical heaters and gas heaters to keep ourselves warm. इसका आप comparison भी बना सकते हैं कि older days में जो है वो लकड़ी जलाई जाती थी और आजकल जो है वो heater जो है वो use किए जाते हैं to keep us warm. So my dear students, next another homework that you will do is given on page number 49. That is an independent activity number 2. Ask your grandparents and parents how schools were at their time. Were schools at their time different from that of present day schools? Collect their answer and share with your class. So my dear students, अब आप सबको जो है घर जाना है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनके ज़माने में एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था, और फिर आप उसको आज अपने एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें कि आज आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा है. Here you can see, मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ. Just ask them that do you have video lectures at your time? जैसे कि अभी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दे रही हूँ. You just open the scanner, you scan the video and you can watch it. In older times क्या उनके पास ये तमाम टेक्नोलॉजीज थी? Of course not. So compare it and then share it with your class fellows. This is just an oral activity, okay? So my dear students, what have we learned today? So today we learned that education system has become better and advanced over time. Most of the new developments have made our lives very easy, and they help us to save time and money also.
So my dear students, with the passage of time, the technologies and the things are getting better and better. They are getting more developed. They also save our time and money. लेकिन इनके साथ साथ कुछ चीज़ों के नुकसानात भी हैं, क्योंकि excess of everything is bad. Do not watch television and mobile for longer than 1 hour. I keep on telling you this, okay? So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.